Let's talk about dishonor of checks, which is the most important topic under the NI Act. Honor the check का मतलब होता है successful transaction of the amount which has been cited to the beneficiary concerned. If the bank refuses to dispense the check sum to the beneficiary, it would be considered as a dishonored check. 92 के अंदर बोला गया है नॉन पेमेंट की वजह से अगर आप मना करते हैं तो डिसऑनर्ड है, और 91 में अगर नॉन एक्सेप्टेंस की वजह से आप मना करते हैं तो. Section 138 talks about that check dishonored due to insufficient funds in the account. इस केस में imprisonment जो है वो minimum 1 year है और maximum 2 year है. But then definitely it has certain provisos attached to it. First states अगर check present किया गया है बैंक को within 6 months from the date on which it is drawn or within the period of its validity whichever is earlier, तो उस केस में आप 138 का application नहीं कर सकते हैं. Payee or holder in due course demands the payment of said amount by giving notice to the drawer of check within 30 days of the receipt info from bank regarding the return of the check as unpaid. This case maybe 138 would not be applicable. And also if drawer fails to make the payment of the said amount to payee, then within 15 days of the receipt of the said notice, then also it is not going to be the case of section 138. अगेन सेक्शन 139 के अंदर प्रिजम्पशन क्रिएट किया गया है इन फेवर ऑफ द होल्डर, यानी अगर किसी के पास आपका चेक है या एनआई है तो हम ये मान लेते हैं कि जो होल्डर है उसने उस चेक को रिसीव किया है फॉर द डिस्चार्ज ऑफ एनी डेट और लाइबिलिटी. 140 के अंदर डिफेंस विच मे नॉट बी अलाउड इन एनी प्रोसिक्यूशन अंडर सेक्शन 138 दैट द ड्रॉअर हैड नो रीजन टू बिलीव व्हेन ही इशूड द चेक दैट द चेक मे बी डिसऑनर्ड एज पर सेक्शन 138. 141 के अंदर ऑफेंसेस बाय कंपनी, यानी कंपनीज को डीम्ड टू बी गिल्टी माना गया है और ऐसे कोई भी इंसान जो इंचार्ज है, रिस्पॉन्सिबल है फॉर द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस ऑफ द कंपनी, इन सब लोगों को गिल्टी माना गया है अंडर सेक्शन 141. But then again, there are certain provisos attached to it, yani there would be no punishment if it has been proved that there is no knowledge of it and there has been due diligence to prevent the commission of the crime, or by an amendment in the year 2003, directors by virtue of his holding any office or employment in the central government or state government or financial corporations which are owned and controlled by the government, they are not liable for prosecution. सेक्शन 142 के अंदर कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंसेस की बात की गई है. कहा गया है कि रिटन कंप्लेंट पे ही की रिटन कंप्लेंट पे ही कॉग्निजेंस लिया जाएगा विद इन 1 month फ्रॉम द डेट ऑन विच द कॉज ऑफ एक्शन अराइजेज अंडर सेक्शन 138, provided such complaint can be accepted even at the prescribed period if the payee satisfy the court for having sufficient reasons. कॉग्निजेंस लिया किसके द्वारा जाएगा? मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट या फिर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास यानी जेएमएफसी के द्वारा. सेक्शन 143 के अंदर कोर्ट को पावर दी गई है कि वो इन केसेस को समरली डिसाइड कर सकते हैं एज पर सेक्शन 262 टू 265 CRPC. पनिशमेंट इम्प्रिजनमेंट की 1 साल, फाइन 5,000 एंड दे कैन बी एक्सटेंडेड. ट्रायल टू बी कंटिन्यू डे टू डे अंटिल कंक्लूजन. एक्सपीडिशियस होना चाहिए. कंक्लूजन विद इन 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ द कंप्लेंट होनी चाहिए. Section 143 capital A also talks about power to indirect interim compensation, and notwithstanding anything contained in CRPC, the court trying any offence under section 138, they may order the drawer of the check to pay interim compensation to the complainant in a summary trial or summon case or any other case upon framing of the charges. And summary cases के अंदर when he pleads not guilty to the accusation made in the complaint. The notable point over here is कि जो interim compensation है that should not exceed 20% of the amount of the check, and also it shall be paid within 60 days from the date of such order or within such further period not exceeding 30 days as may be directed by the court. If drawer of the check is acquitted, the court shall direct the complainant to repay the interim compensation with interest at the bank rate as published by the RBI within 60 days of such order or further period not exceeding again 30 days. The notable point over here is that the interim compensation may be recovered as if it were a fine under section 421 CRPC. Now this section 144 talks about mode of service of summon. कैसे summon कैसे सर्व किया जाएगा? तो a magistrate issuing a summon to an accused or a witness may direct a copy of summons to be served at the place
where such accused or witness ordinarily resides or carries on business or personally works for gain by speed post, either speed post or such courier services as approved by a court of session. Also, this provision talks about some presumption regarding the service of summon, which states अगर किसी तरह का acknowledge कर दिया गया है, साइन किया गया है by the accused or witness, और किसी तरह का endorsement है purported to be made by any person authorized by the postal department or courier services, that the accused or witness refuse to take delivery of summon, the court may declare that the summons has been duly served. Section 147 states that these offences under these Act are compoundable in nature. 148 states that the power of appellate court to order payment pending appeal against conviction. इस प्रोविजन को इंस्टीट्यूट किया गया है बाय द अमेंडमेंट ऑफ 2018. यहाँ पर 20% of fine compensation as ordered by the trial court in addition to the interim compensation under section 143 capital A should be deposited within 60 days of order or such exceeding date not exceeding 30 days. Notable point that the appellate court may order the release of the amount deposited by the appellant to the complainant at any time during the pendency of the appeal. And if appellant is acquitted, court shall direct the complainant to repay to the appellant the amount so released with current interest rate within 60 days plus 30 days. There are certain landmark judgments regarding this dishonor of case checks. पहला है इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन इंडिया वर्सेस इंडियन टेक्नोलॉजीज एंड इंजीनियर्स. फिर है मोदी सीमेंट लिमिटेड वर्सेस कुशल कुमार नंदी. फिर है NA आईसैक वर्सेस G-Man P अब्राहम एंड अनदर. जुरिडिक्शन के पैरामीटर पे देर आर टू इम्पोर्टेंट केसेस. के भास्करन वर्सेस शंकरन रायध्यान बालन 1999 का केस है. क्राइम अंडर सेक्शन 138 कैन ओनली बी कमिटेड बाय concatenating several acts, that is it would constitute several acts, right? जैसे कि ड्रॉइंग चेक, प्रेजेंटेशन, अनपेड चेक रिटर्न टू सेंडर, रिटर्न नोटिस टू ड्रॉर, फिर ड्रॉर का फेलियर टू सच रिक्वेस्ट. Any court where any of such act is committed, that court would be having the jurisdiction to decide or to hear that case, right? फिर आपका आता है दशरथ रूप सिंह राठौर वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड अंदर का केस, जहाँ पर ये बोला जाता है कि कंप्लेंट मस्ट बी फाइल्ड इन द लोकेशन where the bank branch on which the check was drawn is located, and this judgment will apply retrospectively. So these provisions would come under the topic dishonor of checks, and with this we conclude the NI Act. Thank you.